this has to be made public before the advocates community, so that it may be either issued a notice to the bar associations or to the advocates in general, so that we would come to know that what are the measures and efforts have been taken by the chairperson and the bar council members. We also urge all the members to come together and to resolve this issue at the earliest. Thank you so much. Friends, today we have come to Bar Council of Telangana on 13th August 2020 to give a representation on behalf of all the advocates who have not received the amount which has been disbursed by the government of Telangana under the trust. The amount which has been disbursed earlier by the Telangana government is completely insufficient. The amount which was reserved for the advocates under the trust was 100 crores, out of which only 15 crores has been released. We urge the government to release the remaining 85 crores of 85 crores of money immediately, so that many advocates who are suffering without work and they are not in a position to do any other work also. Therefore, we request the government to release the amount at the earliest, and also urge the Bar Council chairperson and the Advocate General and all the people on the board of the trust to make it expeditiously and release the amount, so that the advocate community who is suffering will be at ease. The amount which is earlier given is not enough for the advocates. They don't have any other avocation to do, or not, they don't even have any other source of income. Therefore, the earlier orders of the Supreme Court also clearly stated that the advocates cannot practice, and it is also mandated under the Bar Council Act also that advocate cannot work anywhere other than that profession. Keeping the dignity of the profession, we advocates not indulge in any other profession or trade. We request the government to release the money at the earliest, and also the authority concerned and the chairman to take this thing very seriously and release it immediately, so that the advocates will be at ease. Further, we also urge all the advocates community to cooperate in this matter, and also write letters to the Bar Council chairman to really get this release at the earliest, and also urge the chairperson to inform us what is really happening and what are the communications has been done on behalf of the Bar Council of Telangana to get the money released. This has to be made public before the advocates community, so that it may be either issued a notice to the bar associations or to the advocates in general, so that we would come to know that what are the measures and efforts have been taken by the chairperson and the Bar Council members. We also urge all the members to come together and to resolve this issue at the earliest. Thank you so much. 2020 నరసింహారెడ్డి గారికి చైర్మన్ ఉన్నారు కదా, ఇచ్చి మా సమస్య గురించి చెప్పుదామని వచ్చినాము. నా పేరు దివాకర్ గౌడ్, అడ్వకేట్. దాదాపు 2000 మందికి ఇప్పుడు ఈ 10,000 ఏదైతే ఇచ్చారో అది రాలేదు. దీని విషయమై 1కి 4 సార్లు లా సెక్రటరీ గారిని, సీఎం గారిని సంప్రదించి ఇది అందరికీ అందే విధంగా చూడవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఈ అడ్వకేట్స్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో చాలా సఫర్ అవుతుంది. ఈ 10,000తో ఏదో అయిపోతుందని కాదు, కాకపోతే అందరికీ ఈ 10,000 అనేది గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది. పేదవారు చాలామంది మిగిలిపోయి ఉన్నారు. వాళ్ళ విషయంలో 1కి 4 సార్లు కలిసి లా సెక్రటరీ గారిని, సీఎం గారిని, ఇంకా ఎవరిని కలవాలి, ఎలా రిలీజ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి అవన్నీ చేసి అతి త్వరలో రిలీజ్ అయ్యే ఏర్పాటు చేస్తారని మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చినాము. సార్ అందుబాటులో లేనందున ఆఫీస్లో ఇన్వాల్వ్లో ఇచ్చి తీసుకున్నాము. దీని విషయమై తగిన చర్యలు త్వరగా తీసుకొని అడ్వకేట్ కమ్యూనిటీని కాపాడాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. आज
15/8/2020 के दिन हम लोग तेलंगाना बार काउंसिल यहाँ पर नरसिम्हा रेड्डी साहब एडवोकेट जो चेयरमैन भी हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिए है आज। तो वजह ये है कि जो 10,000 रुपये जो सबको दिया गया था, जो गवर्नमेंट सैंक्शन करी थी 25 करोड़ रुपए, उसमें से 15 करोड़ का जो है सो रिलीज़ किया गया था, डिसबर्समेंट हुआ। तो जो एडवोकेट्स को बेनिफिशियरी लिस्ट के अंदर नाम आने के बावजूद भी उनको जो अमाउंट नहीं मिला, तो उसके प्रोसेसिंग में इससे पहले हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, नोटिस भी दिए थे। उसका अपडेट लेने के लिए फिर हम लोग यहाँ पर आए, उनसे मिलने की कोशिश की, पर अवेलेबल नहीं है उन्हें, तो हम लोग बार काउंसिल में जो है सो रिप्रेजेंटेशन दी। तो उनका ये कहना है बार काउंसिल के लोगों का कि वो लोग भी जो है सो गवर्नमेंट को 10 करोड़ रिलीज़ करो बोल के रिप्रेजेंटेशन दिए थे, और 2 दिन पहले भी रिमाइंडर दे चुके हैं वो लोग, और वो लोग भी वेटिंग में हैं। तो इस सिलसिले में हम आए, तो हमारा ये मुतालबा इसके अलावा ये भी है कि 10,000 रुपये जो एडवोकेट्स को मिले 3 महीने पहले मिले सो है, और 3 महीने से लेकर अब तक कोई अमाउंट का ज़रिया जो है सो कोई अमाउंट नहीं मिला वो लोग को, और जिसको अमाउंट नहीं मिला अभी हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं यहाँ से पूछने के लिए। अभी सवाल ये है कि जुमला 100 करोड़ रुपए एडवोकेट्स को जो है सो सैंक्शन किया गया एडवोकेट फ्रैटर्निटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, तेलंगाना एडवोकेट की तरफ से, और उसमें से 25 करोड़ जो है सो सैंक्शन किए। 100 करोड़ में से 25 करोड़ 2 बोल के जो है सो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, उसमें से 15 करोड़ दिया गया, 10 करोड़ के लिए वेटिंग में है। तो हमारा मुतालबा चेयरमैन साहब से ये है कि बाकी के 75 करोड़ के लिए आप क्या स्टेप लिए, क्यों आप जो है सो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए, क्यों आप कोशिश नहीं कर रहे एडवोकेट्स के लिए? क्या 10,000 रुपये से एक महीना या 6 महीने या 2 महीने 3 महीने जो है सो इंसान गुजारा कर सकता क्या? और जो एडवोकेट लिए 3 महीने पहले 10,000 रुपये अब तक ख़त्म हो चुके हैं, उन लोगों के पास ख़त्म हो गए। अगर ये 75 करोड़ के अंदर भी अगर 10-10 हज़ार रुपये यानी एक खुद 10-30 हज़ार रुपये अगर मिल जाते हैं तो कुछ आगे पीछे करके वो कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली जो सो ऑर्डर के हिसाब से एडवोकेट को बिजनेस भी नहीं कर सकता बोलकर जो सो ऑर्डर आ चुका है। तो इसलिए एडवोकेट के हाथ पैर बांधे हुए हैं, वो कुछ काम नहीं कर सकता। एडवोकेट सारा जो है सो पूरा प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड है। इसमें लेडी एडवोकेट्स है, इसमें बेवा एडवोकेट्स है, इसमें डिवोर्स एडवोकेट्स है, वेटिंग डिवोर्स है, बच्चे हैं जो टोटली अपने सीनियर के जो सो सैलरी पर डिपेंड है, और कुछ एडवोकेट्स कमीशन जो है सो करके अपना गुजारा करते हैं। उन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है। सोना घर का जो है सो बेच चुके हैं, मंगलसूत्र भी जो है सो रहन डाल चुके हैं, बेच चुके हैं, समझे, और जो है सो कोई गुजारे का कोई जो है सो ज़रिया आमदनी का नहीं रहा, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो हमारा ये मुतालबा चेयरमैन साहब से भी, तेलंगाना गवर्नमेंट चंद्रशेखर राव साहब स्टार्ट एडवोकेटों को थोड़ी सी राहत मिलेगी, बस शुक्रिया। ఆగస్ట్ 2020 నరసింహారెడ్డి గారికి